Right. So last class we were dealing with the print और print के अंदर में we were seeing the operators. So we had seen uh, so far we have seen print with strings and print for printing the values of different types. And we had started print for printing the result of expressions. Okay. Next. So we'll continue from with print with result print for result of expressions. इसके अंदर में we had already seen under this we have already seen uh, what are operands operators and expressions. Okay, now and we had started with this is done. So we had started with arithmetic operators and under arithmetic operators you have plus, minus, that is addition, subtraction, multiplication is symbolized by the operator asterisk. Okay, forward slash for division, double forward slash for integer division, then percentage symbol for remainder operator or modulus operator, this is known as, okay, and then we had exponentiation operator. Okay, now so addition, subtraction and multiplication we know, right? So we'll see a few behaviors. Okay, what happens when we multiply two numbers? Okay, so first what happens when we add two numbers? 2 plus 3. So integer plus integer will give you integer. What about integer plus float? It will give you float. Okay. Do we have any other type of number in numbers? One is integer, another is float. Any other type? Batao. Under numeric types, numeric data types, do we have any other type? Yes, Anand. सौरभ बताओ, किसी को नहीं याद है? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कॉम्प्लेक्स
डबल इज नॉट देयर, जावा को मत याद करो, इधर पढ़ नहीं रहे हो तुम। ओके, x इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? So it'll be ax plus bi. हाँ, ax plus bi. ax प्लस bi। क्या बोल रहे हो? या तो a बोलो या x बोलो। Okay, a plus b. हाँ, a प्लस बी आई, करेक्ट। ये सौरभ तो कहीं और चला गया, आई एन जे। अरे वो तुम वेक्टर में लगता है तुम चले गए सौरभ। ओके, ए प्लस बी आई या एक्स प्लस आई वाई, कुछ भी बोलो, या वाई आई, राइट। सो numeric types are classified under three: int, float, and complex. In fact, at many places you will find int is also divided into two types: int itself and boolean. Okay, boolean is true with capital T and false with capital F. Also remember, all non-zero values are represented as, yes Priyanka, very good morning, and Shashank as well. ठीक है, तो ज़्यादा सो लिए थोड़ा आज। ठीक है, so true also many places where for comparison, uh, many places even non-zero values are represented as true and zero is at times also represented as false. हम लोग देखेंगे ऐसा कहाँ होता है, ठीक है। so ये होता है। so now complex numbers can also be handled by computer। कैसे? let's say मैं लिख दूं 3 plus 4i plus 4 plus 5i। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स। आई नहीं होता है तो क्या होता है? आई नहीं, शायद जे होगा। देखो, या yes, I नहीं होगा विष्णुप्रिया, even in your expression that will be J, because generally जो imaginary axis है तुम्हारा y axis, उसको हम लोग generally J से represent करते हैं। okay, बट हाँ, वो I imaginary को denote करता है, इसलिए मैथमेटिक्स में I भी लिख देते हो। okay, so no no, your expression was correct, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, पर कंप्यूटर में that I is represented as J। I suggest that coordinate is, or that value is plotted on imaginary axis, that is y। ठीक है, तो इस तरह करके तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी। ठीक है, तुम इवन देख लो टाइप 7 plus 9j, क्लास कॉम्प्लेक्स, राइट। So we have observed one thing here. What we have observed? When you perform addition, the answer is, if two integers are there, then you will get integer. If one integer and one float is there, you will get float. One float, two float are there, you will get answer in what you say float. And if any of them is what you say is complex, then your answer will be in complex.
Okay. So I'll write here for plus, take integer operand plus integer, another integer operand, answer will be integer operand. Okay. Integer plus float operand, the answer will be float operand. If you have float plus float operand, answer will be float. Any of the operand, any of the operand is complex, then answer will be complex. ठीक है? Similar for, similar will be the case okay. So similar for subtraction. ठीक है? Right? ये जो operators में what happens when operands are in what combination for addition and subtraction, is it clear? बताओ तब आगे बढ़ेंगे. प्रियंका, शशांक, you all joined late. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? कीर्तना, let me know so that I can proceed. Yes. Okay, ठीक है. So float plus complex is complex. Yeah, one of them complex is complex. ठीक है. Let's see for what happens in the case of multiplication. ठीक है. 2 multiplied by 3 gives you 6. ठीक है. 2 multiplied by 3.2 gives you float. Okay. 2.6 multiplied by 3.2 gives you float again, and then 2 multiplied by, let's say complex number दे देते हैं, 2 plus j answer is complex. That means the case is same even for what? Multiplication, subtraction and multiplication. ठीक है. Let's check for division. Okay. 2 4 integer divided by another integer, तो इसमें क्या मिलेगा? इंटीजर आएगा? नहीं, आंसर इज फ्लोट. ओके, लेट अस चेक. फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय
इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय फ्लोट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? आई डोंट नो, आई एम जस्ट चेकिंग। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझे? फॉर डिवीजन, फॉर डिवीजन for any combination of operands, ब्रैकेट में लिख देते हैं, अदर देन कॉम्प्लेक्स टाइप्स, other than complex types, answer will always be float. Okay, for any of the operand as complex or both operand as complex, answer will be complex. ये समझ में आया? बताओ, तो आगे बढ़े। Is this clear? Yes, tell me. Okay. ठीक है, अभी बहुत बेसिक बेसिक चीज देख रहे हैं फिर से, राइट? मे भी इतना डिटेल में मैं फर्स्ट राउंड में भी नहीं गया था। Okay. Then we'll briefly see for, अब नाम है उसका इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर, सो इट विल ऑलवेज गिव यू आंसर इन इंटीजर, ठीक है? सो व्हाट विल बी द आंसर व्हेन 23 इज डिवाइडेड, व्हेन यू परफॉर्म इंटीजर डिवीजन ऑफ 23 by 2? क्या आंसर आएगा? जल्दी लिखो, टाइप इट आउट एंड लेट मी नो। Anand believes 11. Okay, anyone else with different answer? सौरभ को भी 11 लग रहा है। चलो ठीक है। So integer division operator gives you the integer, an integer part of what? Okay, ठीक है कितना? Yes. So it always retains the quotient part. When you divide one divisor by dividend, you will always it will always give you the answer the in quotient part. Okay. अब यार कॉम्प्लेक्स डिवीजन का मुझे नहीं पता है सौरभ, व्हाट इज द रूल? आई फॉरगॉटन मैथमेटिक्स, राजीव सर से पूछना। बट बोल दियो तुम तो मैं देख लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर ना, तो इसीलिए मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो क्या आंसर देगा, पर देख लेते हैं। कांट टेक फ्लोर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, मतलब इंटीजर डिवीजन क्या करता है, डिवाइड करने के बाद नंबर लाइन पे उसका फ्लोर ले लेता है। फ्लोर याद होगा, जो इंटीजर ऑन द नंबर लाइन प्रेजेंट जस्ट बिफोर इट, ठीक है, दैट मीन्स इट रिटेन्स द क्वोशिएंट पार्ट। तो इंटीजर इसमें नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट डजंट लाई ऑन द रियल नंबर लाइन।
ठीक है, इसीलिए इट कैनॉट फ्लोट, मतलब कि इंटीजर वैल्यू ऑन द नंबर लाइन बिफोर इट कैनॉट बी टेकन. ओके, राइट. What about exponentiation operator? It gives, what will be the answer? क्या होगा? 8. What will be the answer? ठीक है, ये तुम्हें याद नहीं होगा, मतलब पता नहीं रहेगा, बट आंसर विल बी इन इंटीजर एंड फ्लोट. आंसर विल बी इन फ्लोट. सो आई थिंक इट विल गो द सेम वे. ठीक है, इंटीजर इंटीजर. अब इसमें कॉम्प्लेक्स, आई डोंट नो कॉम्प्लेक्स पे पावर काम करता है कि नहीं. हाँ. So it also, integer division operator also goes same way as, कहाँ गया? Just, it also goes the same way as addition, subtraction and multiplication. Addition, subtraction, multiplication and exponentiation. Trend same है. Okay. Right. So we have seen all types of operators. Okay. Now we will be seeing how print returns the result of expression. Okay. So this result of expression can be of two types. Can be further divided into two types. Expressions containing only numeric operands and expressions containing mix of numeric and string and or string operands. That means either pure string operands or mix of uh, string and containing mix. हटा देते हैं word. It's not making sense. अरे यार रुक जाओ. Right. Containing numeric and or string operands. That means expressions which contain purely string operands or mix of numeric and string operands. इस केस में क्या होगा? Result will be according to the rule of mathematics
mathematics, and operators that will be used. Operators used will be plus, minus, multiplication, uh, multiplication, division, integer division. Okay, then you have exponentiation. Along with that, you may also have, which we will see later, we'll revise later. These are known as arithmetic operators. Okay, so in short, all arithmetic operators. And you can have logical operators, relational operators, ठीक है, etc. Here you will have mostly, here what all things will happen? Here two operations will be performed, that is known as concatenation and replication mostly. ठीक है, mostly. ओके, ऑपरेटर्स जो जनरली यूज होगा, ऑपरेटर्स used will be plus and multiplication. This is for concatenation and this is for replication. ठीक है, so let's say this is your first type and this is your second type. Okay, so example of first type will be example of first type. Example of first type will be, क्या हो सकता है? 2 multiplied by 3 plus 4. ठीक है, this can be an example. Or 3.2 divided by 0.6, ठीक है, plus 7 whole multiplied by 2. तो इस तरह के examples wherein all the operands used are only of numeric types, so there this will belong to the first category. Just a minute. So it will belong to the first category. Okay, so here normal rules of mathematics will be used as per the rules of BODMAS. ठीक है, वो जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही हम लोग we are going to solve it.
However, example of second type. Example of second type में क्या? First example में where all the operands are strings and we know only two operators can be used, that is plus and multiplication. Other operators we are not going to use in case at least one of the operands are string. इसका आंसर क्या होगा? This plus is concatenation operation, that means merging. So here concatenation or merging will take place. Answer will be hi, hello. This will be a single string that will be formed as a result of concatenation. Okay. If it is second example 2 plus hi, that means mix of both, then again concatenation. 2 hi. ठीक है. ये समझ में आ रहा है? If it is hi multiplied by 4, then what you will see? 4 times hi repeat होगा. This is replication or repetition. Okay. Or even other way, 4 into high, same thing हो जाएगा. Okay. तो सेम ऊपर वाला ही आउटपुट आएगा, रेप्लिकेशन. ठीक है. One thing to note here is in concatenation, देखो 2 प्लस हाई. अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे सही नहीं बताया था. देखो वही मुझे लग रहा था, that's why I tried. This is incorrect. ठीक है. So in concatenation or merging, both the operands must be string. ठीक है. If at all you have to merge an integer with string, can you do it? Some workaround is there? बताओ. Okay. Is there a workaround? Saurav? टू प्लस हाई, लेकिन हाँ ठीक है, वो तो तुमने स्ट्रिंग बना दिया प्रियंका 2 को, बट विदाउट डूइंग दैट
अगर मैं चाहूं कि इंटीजर टू कॉन्कैटिनेट विद स्ट्रिंग हाई, is it possible? Some workaround? Because we have seen that in this form 2 plus high it won't work, not possible. Workaround है, देखो, not possible is correct answer, but if you want you can convert integer to string, str functions. ठीक है, then 4 multiplied by I, ठीक है, वो भी काम करेगा. Can we do this 4.2 multiplied by I? No. ठीक है, cannot multiply sequence by non-int type float. So we also see in concatenation merging both the operands must be string. ठीक है, also in case of replication or repetition, one of the strings or one of the operands must be string and other must be integer. ठीक है, करेक्ट. इतना देख के बताओ, इज इट क्लियर? हाँ, वो इंटीजर नहीं कंसीडर होगा, दैट इज करेक्ट, बट करना ही है तो वो करेंगे वैसे. ठीक है, केवल शशांक को लगता है समझ में आया. ओके, कीर्तना इज आल्सो अंडरस्टूड. ठीक है, सो ओके फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनपुट एंड आउटपुट. इसमें ज्यादा है नहीं अब, आउटपुट के बारे में rather. Now we have seen all the three ways the print can be used. Okay, we still have to see escape sequences, we still have to see what you say is your types of operators that is left, but we will come to that again, come back to that again. Okay, once we see how to take inputs. Okay, so next is in output part is complete, so we are going to progress on to हाँ वो करेंगे सौरभ, फॉर्मेटिंग भी आएगा. is accepting user input. Okay, what is the need to use accept user input? ठीक है, what अच्छा, what should be the basis or what is the need behind accepting user input? हम लोग यूजर से वैल्यू क्यों लेते हैं? Why we don't or if I frame a question, why do we need to accept user input? Okay,
Or in other words, why can't we directly use hard coded values why can't we directly use make it flexible and user friendly? Yeah, sort of, not exactly coded values in the program. Okay, इसका क्या आंसर होगा? Yes, anybody will like to try? डेटा वेरी फ्रॉम यूजर टू यूजर, इसको थोड़ा बेटर फ्रेज करो, ठीक है? यस एनीवन? विष्णुप्रिया, अखिला? नो आइडिया? ओके, we'll see. Answer is answer is that it is tough for the user to search for where to enter what inside the program. यूजर को तो मतलब ही नहीं होना चाहिए ना. इट विल प्रोग्राम विल नॉट यूजर नीड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट वेयर टू एंटर व्हाट. Wherever screen prompts the user to enter, user should enter. No, like if we are using hard coded values. Hard coded values user won't enter, programmer will enter. If he wants to work like if he wants a program to work according to his wish. According to his wish. अब तुम सही पहुंच रहे हो, but that's what I am saying, better rephrasement. ठीक है, वही सौरभ भी बोल रहा था, डेटा वेरी फ्रॉम यूजर टू यूजर. ओके, so how you will rephrase it in a better way? You can write to make the program more generic and dynamic in nature. ठीक है, जेनरिक डायनामिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम टू add 2 and 3 will always add 2 and 3 only if hard coded values are used. In order to write a general program which adds numbers of user's choice, user input is required. So to write general programs and not specific programs, we need user input is required. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके, बताओ, then I'll proceed. Yes. Okay, right. Now next question is good. ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको. Next is how do we
एक्सेप्ट, हाँ अजय ध्यान देते रहना, हाउ डू वी एक्सेप्ट यूजर इनपुट, कैसे करते हैं, विच फंक्शन इज यूज्ड, इनपुट फंक्शन, ठीक है, which may optionally accept what, accept a string as a parameter, as an argument to be displayed as prompt. Prompt. Example, input, please enter a string. ठीक है, so what is prompt here? This is your string which is being passed as an argument, and it will be displayed as prompt. What do we mean by prompt? Means urging someone to do something. Okay, that therefore this is known as prompt. It gets displayed on the screen and then it urges you to enter a string. So this string that you are providing will be appearing as a message which will be called as prompt. Okay, so prompt means urging someone to do something. ठीक है, ये क्लियर है? बताइए। Prompt and input function. Okay, ठीक है। देखो इतना कॉम्प्रिहेंसिव बुक में भी नहीं मिलेगा, बुक में बकवास बहुत करता है, तो इसीलिए इसको भी नोट की तरह कंपाइल कर सकते हो तुम लोग। आई हैव अपलोडेड लास्ट 2 days पीपीटी तुम्हारा, अगर उसमें चेक किए होगे इन द फाइल्स, you will be seeing this appearing in under the digital boards. So today also I'll do that, so it will be in a systematic manner, notes revision के लिए. Okay, the next point is, and which is the last point of discussion for today, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। If you are accepting a value from the user, then it must be stored by the program. Okay, so this is a statement, but the question is where and why the value needs to be stored.
ठीक है, आंसर टू वेयर विल बी कहां पे? वेरिएबल सर। बट कहां? वेरिएबल इज व्हाट? वेयर इट इज प्रेजेंट? इन द एयर, यू विल स्टोर इट इन द एयर और योर कबर्ड, कहां पे करोगे? द रैम सर। हाँ, in the memory of the computer. Computer RAM. Why? So that it may be used or retrieved for processing later in the program or whenever required. Whenever required in the program. Storage location is also called as variable. So we will continue with the discussion of this from this question again tomorrow. ठीक है, रिवाइज करते रहना, डोंट कीप द बैकलॉग। ओके, सो सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड जितना भी पार्ट रिवीजन तक कंप्लीट करेंगे दैट विल बी द पोर्शन ऑफ योर एग्जाम, जो भी नेक्स्ट एग्जाम जब भी है। ठीक है, ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग इस पे ये कर सकते हैं, जाके रिवाइज कीजिएगा।